Hello everyone, welcome back to Maths class. As the chapter Introduction to Graphs is going on, so we'll continue with the same topic. So today's learning outcomes means after watching this video, you will be able to find distance of a point from x-axis, y-axis as well as from origin. Also, you will be able to read coordinates from Cartesian plane. Beta, though we have already achieved this learning outcome, but today again we'll do one question based on this. Also, you will be able to draw double line graph. So let's begin with distance of a point from coordinate axis and from origin. So, just wait. Distance of a point from x-axis is y coordinate of the point. बेटा जब भी हमने किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस लिखना है तो सिंपली y कोऑर्डिनेट लिख देंगे. लाइक वी हैव एन एग्जांपल a point whose coordinates are 3,7. So distance of this point from x axis is 7 units because its y coordinate is 7. In this case y coordinate is 8. So the distance of this point from x axis is 8 units. In this case we are having coordinates 4, 3. Its distance from x-axis is 3 units. Also, we are having B point whose distance from x-axis is 7 units. So, हमने क्या किया? जब हम distance from x-axis लिख रहे थे, we have simply written their y coordinate. Next, distance of a point from y-axis is x coordinate of the point. So simple बेटा. अगर हम किसी point का y एक्सिस से डिस्टेंस लिखना चाहते हैं तो सिंपली उसका x कोऑर्डिनेट लिख देंगे. लाइक यहाँ पर हमारे पास a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,7. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी 3 units. Why 3 units? Because its x coordinate is 3. Here we are having another point b whose coordinates are 2,8. We want to write its distance from y axis, and distance from y axis is x coordinate, that is 2 units. So here in this case it will be 4 units. And in this case, it will be 1 unit. Chaliye next. Distance of a point having these coordinates from origin is given by this. Means जब आपने किसी point का origin से distance लेना है, तो that is given by under root square root of x coordinate plus square root of sum of square of x coordinate and y coordinate. Like we want to find out distance of this point having coordinates 3, 4 from origin. तो क्या करेंगे? Under root 3 square plus 4 square. That is equal to under root 3 square is 9, 4 square is 16. So we get 25 and square root of 25 is 5. Similarly, if we want to find out distance of point P having coordinates 5, 12 from origin, तो क्या करेंगे? Under root 5 square plus 12 square. 5 square is 25. 12 square is 144. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, we get 169. And square root of 169 is 13. Similarly, we can do these two parts. आप ये try करके देखिएगा. Next, let's begin with great teasers. So the first question is write down the coordinates of origin. I think everybody remembers this. These are 0, 0. What are the coordinates of a point which lies on x-axis? Beta, on x-axis y coordinate is always 0. So it is of the type x, 0. So next question is what is the distance of the point C 4, 2 from y-axis? अब हम इस point का y-axis से distance देखना चाहते हैं. तो वो क्या होता है? x coordinate. तो क्या यहाँ पर x coordinate is 4. So answer is 4 units. What is the distance between the points P 0, 2 and Q 0, 6? अभी दोनों पॉइंट ही y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में गैप है 4 यूनिट्स का. दोनों में डिस्टेंस है 4 यूनिट्स. ये आप कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके भी देख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वर्टिसेस O, A, B of a square OABC are given like this, what are the coordinates of fourth vertex C of the square? चलिए ड्रॉ करते हैं. Here I have plotted O with coordinates 0, 0, then A
with coordinates 2, 0, then B with coordinates 2, 2. फिर मैंने इनको ज्वाइन करके पूरा स्क्वायर कंप्लीट किया. Then what do I find? What are the vertices or the coordinates of this C? These are 0, 2. So I have written answer over here. Now let's do next question. Question 2. Write the coordinates of each of the vertices of each polygon given in graph. Let's see in video. So here we are given polygons. Firstly square, then another one is parallelogram, and the third one is triangle. We need to write down the coordinates of each vertex. Let's begin with A. A के क्या है? 2, 0. चलिए लिखते हैं वहां पर. नेक्स्ट चलिए चेक करते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. 1, 2, 2. फिर ऊपर की तरफ भी 2, तो क्या बन गया? 2, 2. चलिए अब सी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. 0 एंड देन 2. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0, 2. चलिए अब पी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. वो क्या होंगे? 2, 6. चलिए टाइप करते हैं यहाँ पर. वेट करिए. चेक कर रहा है. 2, 6. नेक्स्ट comes coordinates of Q. तो वो क्या बनेंगे? 4, 6. Then coordinates of the point are 5, then 8. So it is 5, 8. लिख लेते हैं साथ में. ऐसे ही coordinates of S are 3, 8. Then comes, let's see, L. L के coordinates क्या है? 5, 4. Then M. M के coordinates क्या होंगे? 8, 2. Last but not the least, N. तो N के coordinates क्या हैं? 5, 0. चलिए ऊपर वाले पॉइंट स्किप हो गए, वो मैं लिख देती हूँ so that you can note down the accurate answer in your notebook also. I think we have achieved learning outcome that will be able to read the points from Cartesian plane. So everybody is able to read points from the Cartesian plane. You can note down the answer from the left side. चलिए, so this is the answer. Next, question 3. The runs scored by the Indian and the Australian teams in first 10 overs are given below. Draw a graph showing the data, making the graphs on the same axis in each case. बेटा दोनों को हमने एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है. इंडियन टीम के रन्स भी और ऑस्ट्रेलियन टीम के रन्स. Let's see. Let's do it on Cartesian plane. So here I have noted down the data. On left side, overs, then runs scored by India and Australia. So overs are taken along x-axis, runs are taken along y-axis. You can see here also. Also I have written on x-axis one big division is 1 over, on y-axis one big division is 1 run. चलिए start करते पहले Indian team. First over 3 runs. चलिए next over, second over 4 runs. Then third over 6 runs.
then 4th over 5 runs, then 5th over 7 runs, then 6th over 8 runs, then 7th over 10 runs, then 8th over 5 runs, then 9th over 6 runs, then 10th over 4 runs. चलिए अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, ए को बी से, देन बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ऐसे सब पॉइंट्स को वन बाय वन ज्वाइन करते जाएंगे कॉन्टिन्यूटी में और हमारे पास लाइन ग्राफ आ जाएगा। यस, H to I, I to J। तो इधर साइड पे हम लिख देंगे दिस इज ग्राफ, लाइन ग्राफ फॉर इंडिया। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएंगे। फर्स्ट ओवर में 5 रन्स, जस्ट वेट, फर्स्ट ओवर में 5 रन्स, देन इन सेकेंड ओवर 6 रन्स, देन इन थर्ड ओवर 8 रन्स, ऐसे वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। यू कैन सी हियर आई एम प्लॉटिंग। इन द सिमिलर वे यू हैव टू प्लॉट all the points in your notebook also. Yes, then in 7th over 4 runs, then in 8th over how many runs? 6. Then in next over 8 runs, in next over also 8 runs. चलिए अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऑस्ट्रेलियन टीम का लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाइन ग्राफ ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऐसे वन बाय वन इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में ज्वाइन करते जाएंगे। पी को क्यू से, then Q to R, then R to S, S to T. This way we get line graph for Australia also. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे this is line graph of Australia. दिया which one is Indian graph, which one is Australian line graph. तो such kind of line graphs are used for making comparison. So this way we have achieved all the learning outcomes. बच्चे, now you are able to read points from the Cartesian plane. Also you will be able to find distance of a point from x-axis, from y-axis as well as from origin. Also you are comfortable in making double line graph. So बच्चे, आपने एक एक्टिविटी करनी है। आप क्या करेंगे, इस पूरे वीक का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट डाउन करिए। तो 1 वीक के बाद जब आपके पास 6 और 7 डेज का डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो आप उसको डबल लाइन ग्राफ से अपनी नोटबुक में शो करिए और अपनी मैथ्स टीचर के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।